Okay, students, a very good morning and welcome back to class 12th physics lecture on induction. And last topic जो हमने किया था, we did the motional EMF due to a rod being rotated in uniform magnetic field. ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक करेंगे. Today we will be starting ahead with self induction. But again, self induction करने के पहले we will go ahead with a problem on EMF generated due to rotation of rod, ताकि एक warm up हो जाए, review हो जाए, and then we will jump ahead. Okay, so we have a question over here. Here there is a magnetic field which is directed inwards, as you can see. Okay, we have a circular loop. ठीक है, we have a circular loop. You may see it to be like a rail. ठीक है, इसको एक रेल की तरीके डील कर सकते हो. Okay, then at the center of this loop we have a rod of length A, which is pivoted at its end. This rod is being rotated on this circular loop. ठीक है, एक रेल की तरीके है और ये इसके ऊपर एक रोटेट कर रही है. But this time we have one difference over here. We have the internal resistance of this particular rod to be given as small r. Resistance of rod has been given to you as small r, and this portion is connected with an external resistor R. जैसा कि तुमको यहाँ पे दिख रहा है. The figure is quite clear to you. The resistance of this rod is small r. Its length is a, and you need to find the current. Find the induced current. अब पहली बात तो ये कि करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स करंट विल बी इंड्यूस्ड. व्हाई? इफ यू सी, इफ द रॉड विल रोटेट, ठीक है, रॉड विल रोटेट, तो हर एक पॉइंट यहाँ पे of this particular conducting rod will be moving in the upward direction. What will be the direction of current induced? क्योंकि हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक बैटरी से. We will be replacing it with a battery, और जैसे ही बैटरी से रिप्लेस करेंगे we will be getting the value. तो पहली बात तो induced EMF आएगा. How much will be that induced EMF in this case? Hurry up, please give me the answer. What will be the induced EMF in the rod? First portion. What will be the induced EMF in this rod? Expression बताओ जल्दी से. Length of the rod has been given to you as A. Clockwise, बेटा रॉड की बात कर रहे हैं बाबू. B omega A square by 2. Very good. It will be B omega A square by 2 volts. I'll put this as equation number 1. And what will be the direction if you take this point as O, this point as A? So as a battery इसकी polarity put करनी पड़ेगी हमको. As a battery इसकी polarity put करनी पड़ेगी. तो V cross B सारे के सारे, if it is rotating, being rotated in this particular direction with omega. ठीक है, very good. तो O will be positive. कैसे? V initial direction सबका velocity का ऊपर है, cross V cross B. That means O will be positive. So I can put this over here like a battery. Sorry, cell. ठीक है, whose EMF is B omega A square by 2. This rod has an internal resistance of small r. This rod has a resistance of r. So can I use this resistance as the internal resistance of this cell? Particularly, yes, I can use it. ये हो गया हमारा स्मॉल r. अब बारी आती है किस सर्किट की? अब बारी आती है ये एक्सटर्नल सर्किट की. तो ये देखो, ये पूरा क्लोज लूप है, and if it is a closed path, there will be a flow of current. Very good अमन. तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को भी कनेक्ट कर दिया हमने. ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट. And from this circuit, it is very easy now for us to find out the value of current I.
which will be E upon R plus R. This resistance and external resistance both are in series. तो क्या मिल जाएगा? Very good all of you. I get it as B omega A square whole upon 2 R plus R amps. Great, great. ठीक है, तो ये just for review था, just for warm up था. So let's move up for our topic of the day, which is self induction. ठीक है, which is self induction. और वापस से we will be using the same basic laws, that is the Faraday's law and the Lenz's law. Faraday's law, Lenz's law को use करेंगे and we find the solution for this particular topic. ठीक है, so let's talk about self induction. We'll talk about self induction. ठीक है, what is self induction, कैसे होता है, we'll see these things now. Now okay, when we'll talk about self induction, we will be talking about a coil. ध्यान से देखो, we'll be talking about a coil. This is also termed as a coil, as well as it is also termed as an inductor. ध्यान से देखो, it is termed as a coil and it is also termed as an inductor, जिसमें कि यहाँ पर छोटे छोटे loops हैं. You can term it as loops. ये हर एक इंडिविजुअल आपको लूप दिख रहा है, alright? क्योंकि इसी से सारा खेल हमको खेलना है. Now, for this particular system, for this particular setup of a coil or an inductor, what are the observations that have been made? What are the changes that are viewed? उसकी बात करते हैं. Let us take case 1. Let us take case 1, where an inductor has been given to us. An inductor has been given to us. And this inductor, there is a current I that is flowing. ठीक है, current I flow कर रहा है, and this current I is changing. ठीक है, this current I is changing, or I can say this is a varying current, or I can say there is a varying current that is flowing through this entire coil, flowing through this entire coil. अब गौर से देखिए, तो जब ये करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट आया, ये इसमें जाएगा इस टाइप से इस टाइप से, इस टाइप से इस टाइप से. Yes, yes. So if you see the direction of current in each loop, the direction of current in each loop is the same. The direction of current in each loop is the same. तो अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि इसका एक मैक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं इस लूप का. ठीक है, लेट्स टेक अ मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ दिस लूप. ध्यान से देखो, केवल एक सिंगल लूप का मैक्रोस्कोपिक व्यू लिया है हमने. ठीक है, और इस लूप में करंट इज फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. Current is flowing in this particular direction. If the current is flowing in this direction, what is the direction of magnetic field due to this flowing current? जल्दी से टेक्स्ट करो. What is the direction of magnetic field due to this flowing current in this particular loop? एक लूप की बात कर रहे हैं. First we will be talking about one loop. Quick, inside, very good, inside the plane of the board. तो यहां से दिख रहा है राइट हैंड थंब रूल यूज करके, that field is directed inside the plane of the board. That means यहां पे field will be directed inside the plane of the board due to this current. अब देखो, यहां से खेल शुरू होता है. The current I which is flowing in this single loop, जो सब लूप्स में है, सिंगल लूप की बात कर रहे हैं, this current I is changing. I is changing. बेटा अगर I change हो रहा है, if I is changing, तो what would be changing? Magnetic field inside the loop change हो रही होगी, but of course हो रही होगी. If the current through the loop is changing, तो इसके अंदर जाती हुई magnetic field भी change हो रही है. B is also changing. B is also changing. अगर magnetic field change हो रही है, तो इसी loop से पास होता हुआ क्या change हो रहा है? Flux phi is changing. क्या change हो रहा है? Flux phi is changing. And if flux phi is changing, if flux phi is changing, then there will be an induced EMF. There will be an induced
ईएमएफ। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है जैसा कि दिख रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल दैट दिस लूप इज अ क्लोज लूप. This loop is a closed loop. That means there will be an induced current. There will be an induced current. किसमें इंड्यूस हो रहा है? It is getting induced in the coil itself. It is getting induced in the coil itself. तो coil खुद में करंट चेंज होने की वजह से एक करंट इंड्यूस कर रहा है within itself. And this phenomena is termed as self-induction. This phenomena is termed as self-induction. तो ये एक लूप में हो रहा है, तो ये सारे लूप्स में हो रहा है. All the loops are individually getting self-induced current. एक induced current आ रहा है, which the coils are inducing themselves due to the change in external current being supplied to the coil or inductor. This is self-induction. Is the process of self-induction very much clear? Self-induction क्या होता है और कैसे होता है? अभी आगे की बात करेंगे. Direction of induced current and other things. Is this part very much clear to all of you? समझ में आ गई बात? चलो, अब अगर ये समझ में आ गया तो let us talk about the direction. ठीक है, तो self-induction का ये पार्ट क्लियर हो गया कि what is self-induction. Due to the change in current, there is a change in magnetic flux linked with the coil, due to which there is an induced current which is directed always opposite to the cause producing it. ये याद ठीक है ना. अब वो डायरेक्शन कैसे निकलेगी ध्यान से देखो. Lenz's law states that whenever there is an induced current, the direction of induced current is so as to oppose the cause producing it. Oppose the cause producing it. तो बात खेलना है अगर Lenz's law में induced current का direction, तो we need to talk about the cause. We need to talk about the direction of the cause. तो चलो देखते हैं केस. Now suppose if we have an inductor or a coil over here, and we have a current I. We have a current I which is increasing in this direction. Which is increasing in this direction. Increase कर रहा है. तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी? इसको इधर इंक्रीज ना करने दे, इधर इसको इंक्रीज ना करने दे. That means direction of induced current will be opposite. This is I induced. This will be the direction of induced current. Just opposite, क्योंकि I इधर increase कर रहा है. I इधर increase कर रहा है. Okay. Then we have a case. Suppose we have a coil, and this time current I in this direction is decreasing. Current I in this direction is decreasing. So what should be the direction of induced current? What should be the direction of induced current? Current I अब इस direction में decrease कर रहा है. Current I इस direction में decrease कर रहा है. So what should be the direction of induced current? Yes. What should be the direction of induced current? Very clear है यहाँ से इधर increase कर रहा है. Very good, great. That is the same direction. क्योंकि I इधर decrease कर रहा है, तो induced current को इसको इधर increase करना पड़ेगा. That means this will be the direction of I induced. ठीक है? एक तो ये जनरलाइज तरीका हो गया. एक और तरीका समझने के लिए. अभी जब करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो ये ऐसे 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 फिर से वापस एक लूप को उठाते हैं. And I have over here this loop. ठीक है? I have this loop over here. ठीक? करंट की डायरेक्शन ऐसी है. I जो फ्लो कर रहा है. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर. किधर होगी? अंदर. बराबर? अच्छा. Now this magnetic field, because this current is increasing, that means the magnetic field inside will also be increasing. That means the magnetic field inside will also be increasing. तो बेटा करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? But of course अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन
बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड देनी चाहिए। यस, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बाहर की ओर फील्ड है, क्योंकि ये अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा है, अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट अपोज करेगा। दैट मींस इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट। दिस विल बी आई इंड्यूस। क्लियर? अब वही चीज यहां देखो, अब यहां पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है करंट का, ठीक है। फिर से वापस लूप बना लेते हैं, सिंगल लूप पे चेक कर लेते हैं। तो करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है। फील्ड किधर है? अंदर। फील्ड किधर है? अंदर। बट दिस टाइम द फील्ड इनसाइड द लूप इज डिक्रीजिंग। फील्ड इनसाइड द लूप इज डिक्रीजिंग। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? इनसाइड द लूप इंक्रीज करेगा, इनसाइड द लूप इंक्रीज करेगा। मतलब जो इंड्यूस करंट होगा उसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? इनसाइड होनी चाहिए। तो इनसाइड के लिए डायरेक्शन करंट की क्या होगी? इनसाइड के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? सेम डायरेक्शन आएगी, दिख रहा है? We have the same direction. So you can analyze this situation in both the ways. ये दोनों तरीकों से तुम ये situation analyze कर सकते हो. Is this clear to all of you? Yes, please. Yes. Is it clear to all of you? Okay, great. Chalo. Now let us talk about certain expressions about self-inductance and learn something more about self-inductance. ठीक है? तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, हमको कैसे पता चलेगी। तो लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन एक्सप्रेशंस फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है? तो अगेन वी टेक अ कॉइल, ठीक है, then coil current I is passing through the coil. Again we take a single loop, ठीक है, एक लूप ले लेते हैं. Let us assume that through this loop the flux passing is phi and there are n turns in the loop. There are n turns in this particular coil, ठीक है, n loops है इस coil. Now flux phi is the amount of flux passing through one coil. Amount of flux passing through one coil. So total flux passing through all the coils कितना हो जाएगा? I can state it as n phi. बराबर? देखो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक से phi पास हो रहा है तो n से कितना पास होगा? n phi. पॉइंट क्लियर? अगली चीज देखो भाई, now total flux through this coil is dependent on what? Is dependent on what? It is dependent upon the current. क्यों? करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, फ्लक्स डिक्रीज करेगा. That means I can say that total flux phi t is directly proportional to the current I flowing through the coil. Is directly proportional to the current I flowing through the coil. If you need to remove the sign of proportionality, so you need to introduce a constant, and that constant comes over here, which is Li, which is Li. ध्यान से देखो, and this L is known as the coefficient of self-inductance. It is termed as the coefficient of self-inductance. ठीक है, coefficient of self-inductance. बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट S. तो L को देख लो, यहां से क्या होगा? phi t upon I. phi t upon I, that is Weber per ampere or Henry, which is denoted by capital H. It is denoted by capital H. Henry. Is it clear to all of you? Is it clear to all?
समझ में आ गई? तो बेसिक था। अभी देखो एक और चीज थी, टोटल फ्लक्स फाई टी जो हमने निकाला था, दैट वाज इक्वल्स टू n टाइम्स फाई टी इज इक्वल्स टू li, इक्वेट कर सकते हैं दोनों को, और आई कैन से n फाई, ये इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 1 और 2 both are same, so li is equals to n times phi, देखो ये भी n phi है, phi t है, ये भी phi t है, तो li is equals to n times phi. So from here you can see L, which can also presented as n times of phi divided by r. N times of phi divided by r. Question. But तुमको मेन जो एक्सप्रेशन याद रखनी है ये याद रखनी है, क्योंकि इसका यूज काफी जगह है, so you need to anyhow remember this particular expression. Is this clear to all of you? हाँ भाई, क्लियर है? Is it clear? तो साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट देखो जो तुमको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बोर्ड और कॉम्पिटिशन के दोनों के। देखो क्या, L only depends upon the geometry of coil. L only depends upon the geometry of coil. मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I, फ्लक्स phi पे डिपेंड नहीं करता है। इसको अच्छे से दिमाग में भर लो, अच्छे से दिमाग में भर लो। मैग्नेटिक field, magnetic flux, current, they are not going to have any effect on self-inductance. Self-inductance L only and only depends upon the geometry, that is the shape and size of the coil, of the loop. ठीक है, चलो, तो भाई यहां से ये एक्सप्रेशन हमको मिल गई, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हमने बात करी, दैट इज phi t is equals to L. ठीक है, चलो अब आगे का खेल देखते हैं। अब आगे के खेल की बात करेंगे भैया। अब आगे के खेल में बात करनी है हमको इंडक्शन, बात करनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, क्योंकि मेन तो वही खेल है ना इंडक्शन का, मेन खेल तो इंडक्शन का ही खेल रहा है। तो नाउ एज पर फैराडेज लॉ, एज पर फैराडेज लॉ, induced EMF E is given as d phi by dt, d phi by dt, ठीक है। अच्छा, phi की बात कर रहे तो यहाँ phi t लिख देते हैं, टोटल फ्लक्स, क्योंकि ईच कॉइल पूरे कॉइल की बात कर रहे हैं। ओके, एंड as phi t is equals to Li, phi t is equals to Li, therefore induced EMF E will be d phi t कितना है, Li है, तो Li by dt। ओके, L कांस्टेंट है, which depends only on the geometry, that is the shape and size, तो L कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, so therefore I get E is equals to L di by dt, E is equals to L di by dt, ध्यान से देखिए। But applying Lenz's law, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। दैट मींस वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, दैट इज माइनस L di by dt। कहां पे यूज करना है नेगेटिव, कैसे यूज करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी विल डूइंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो induced EMF E is given as minus L di by dt, ठीक है, ये याद रखना, नेगेटिव साइन इंट्रोडक्शन होता है लेंज़ेस लॉ के लिए। मैग्नीट्यूड के लिए यू डोंट रिक्वायर, बट डायरेक्शन के लिए यू रिक्वायर टू पुट द नेगेटिव साइन, सो दैट यू अंडरस्टैंड कहां पे पोटेंशियल हायर है, कहां पे पोटेंशियल लोअर है, बराबर।
क्लियर है ये? अब यहां से you get one more expression for L को देखो, यहां से अगर L देखोगे तो L कैन बी रिटन एज फ्रॉम इक्वेशन 3, लिख देता हूं इसको, ये हो गई 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 L can be defined as E divided by di by dt, E divided by di by dt। अब गौर से देखो, for a current change of 1 amperes per second, मतलब di by dt की वैल्यू क्या ले ली, 1 यूनिटी। For a current change of 1 ampere per second, the self inductance of a coil is equal to the induced EMF। और ये यहां से बात क्लियर होती है कि if you put di by dt equals to 1, so you will get L equals to E। तो for a current change of 1 ampere per second, the induced EMF is equal to the self inductance, or the self inductance is equal to the induced EMF। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे जिसमें डायरेक्शन वाला खेल जो चल रहा है, this will be clarified for you। Is it clear to all the students? Yes please। Is it clear to all the students? Okay। ठीक है, तो चलो भाई, लेट अस डू सर्टेन प्रॉब्लम जिससे करंट का डायरेक्शन और ये माइनस का इंक्लूजन ये तुमको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, डायरेक्शंस कैसे लेनी है। चलो, तो हियर वी गो विद क्वेश्चन नंबर 1 which says find the induced EMF and VP minus VQ। ठीक है, find the induced EMF and VP minus VQ for the system shown। सिस्टम कुछ इस टाइप से है, ये है, ये करंट जा रहा है I, this is say 4 Henry, and the rate of change of current di by dt while flowing is say 2 amperes per second। 2 amperes per second। You've got to find out the induced EMF, which is very easy to calculate, as well as you need to find out VP minus VQ। You need to find out VP minus VQ। तो induced EMF E, which is L di by dt। ठीक है, L di by dt कितना हो जाएगा, L कितना है 4, di by dt कितना है 2, तो बड़ा सिंपल सा आ गया 8 वोल्ट। वेरी गुड। नाउ VP माइनस VQ कितना होगा, ये चेक करने के लिए वापस तुमको देखना पड़ेगा डायरेक्शन। VP माइनस VQ भी 8 वोल्ट ही होगा, बट प्लस की माइनस वो चेक करने के लिए खेल देखो ना। di by dt over here if you see, di by dt over here if you see, तो di by dt कैसा है, प्लस है, पॉजिटिव है भाई, कोई साइड नहीं दिया तो पॉजिटिव है। दैट मींस di by dt is increasing, दैट मींस करंट इज इंक्रीजिंग। ध्यान से देखिए, करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो बेटा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए ना, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसी होनी चाहिए, so what can I do? We'll try to replace this with a battery, with a cell, sorry। We'll try to replace this with a cell जिसमें करंट की डायरेक्शन इधर है। अगर करंट की डायरेक्शन इधर है, that means पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है। ये आ गया Q,
ये आ गया P, और ये EMF कितना निकाला इंड्यूस्ड EMF 8 वोल्ट. So from here this is very much clear that Vp minus Vq is equal to 8. Vp minus Vq is equal to 8 volt. I hope this example must have clarified कि हमें डायरेक्शन कैसे लेनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेक करना है. Is this clear? ये क्लियर है तो एक प्रॉब्लम और करेंगे. हरी अप. Is it clear to all of you? क्लियर है? चलो ठीक है, तो एक प्रॉब्लम और करेंगे और सेम चीज निकालनी है. फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ and Vp minus Vq. ठीक है, find the induced EMF and Vp minus Vq. इससे हमारा डायरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ये एक दो प्रॉब्लम्स है. This time current I is flowing in this direction. It is again 2 Henry. 4 Henry ले लेते हैं, चलो 4 Henry. And di by dt is minus 2 amperes per second. This time di by dt is minus 2 amperes per second. जल्दी से induced EMF E निकालो. जल्दी से induced EMF E निकालो and Vp minus Vq निकालो. What is induced EMF E and Vp minus Vq? What is induced EMF E and Vp minus Vq? अब ये माइनस Vb भी 8 वोल्ट है और EMF इंड्यूस्ड EMF E भी 8 वोल्ट है. इंड्यूस्ड EMF E which is L di by dt. ठीक है, मॉड पुट कर लेंगे क्योंकि इंड्यूस्ड EMF पॉजिटिव ही लेना है. तो ये आया 4 हेनरी into di by dt which is 2, तो आया 8 वोल्ट. इसका मतलब 8 वोल्ट का सेल लगाना है, बट लगाना किधर है? 8 वोल्ट का सेल लगाना, बट लगाना किधर है? तो I इधर की ओर फ्लो कर रहा है and इधर की ओर भी 50 there is a negative sign which shows that the current is decreasing in this direction. That current is decreasing in this direction. If current is decreasing in this direction, तो induced current का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? Increasing. इधर की ओर सपोर्ट करना चाहिए, इधर की ओर सपोर्ट करना चाहिए. इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो इधर की ओर इंक्रीज करना चाहिए. That means जब यहाँ पे इसकी जगह एक सेल रिप्लेस करोगे तो वो कैसा सेल होगा? जो करंट इधर में, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर आएगा, पॉइंट P, पॉइंट Q, 8 वोल्ट. दैट मींस Vp minus Vq is equal to 8 वोल्ट. ठीक है, तो क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिए हैं, दैट मींस this sort, this direction taking is very much clear to all of you. ये अच्छी बात है. ठीक है, तो चलो नाउ लेट्स कम अप विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेल्फ इंडक्शन भी खत्म हो जाएगा. दैट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग solenoid. ठीक है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग solenoid. सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड करने के पहले सबसे पहले जल्दी से मेरे को बताओ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड. सबसे पहले बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड. क्विक, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड? mu n I by L. Very good. Mu n I by L, mu naught n I by L, mu naught n I by L या mu naught n I. याद आया mu naught n I by L या mu naught n I. Very good, कि सबको याद है. So now let us take a solenoid. ठीक है, करंट I फ्लो हो रहा है. ओके, अगेन लेट अस टेक वन लूप. एक लूप ले लेते हैं. एक लूप ले लिया, assuming the radius of the loop to be r, length l, n जो कॉमन था उसको वैसे ही रखते हैं. ठीक है, उसको वैसे ही रखेंगे. So now flux phi through one point, through one loop. Flux phi through one loop, एक लूप के थ्रू. इसकी टोटल लेंथ l है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, कैपिटल N.
small n is the number of turns per unit length. These things are clear to you, पहले से मालूम. So flux phi will be b a cos of theta, ठीक है? तो this will be b a cos of, और यहाँ cos में एक वैल्यू दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एरिया वेक्टर भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर एरिया वेक्टर भी अंदर, दैट एंगल इज 0 डिग्री. सो व्हिच इज BA. देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई ये कितना हो जाएगा, ये 1 का है तो टोटल फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, NBA. Quite clear? Now when we talk about the area of the coil, when we talk about the area of the coil, area कितना है, as area A of each loop is pi r square, ठीक है, and B is mu naught Ni. तो therefore total flux phi t कितना हो जाएगा भाई, total flux phi t कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, that will be N into B which is mu naught Ni into A which is pi r square, which is pi r square. Now this n, अच्छा capital N, small n क्या होता था, number of turns per unit length, n by l होता था, तो capital N को हम क्या लिख सकते हैं, small n into l भी तो लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे small n को capital N by l लिख लो, hardly makes a difference, either of the changes you can do. So as capital N is equals to Nn, capital N is equals to Nn, so therefore ये expression क्या बन जाएगी, total flux phi t will be mu naught I pi r square n square n, ठीक है. This is the total flux. देखिए, this is the total flux. Let this be equation 3. हमने तुमको कहा था ना कि एक एक्सप्रेशन कौन सी, phi t is equals to Li, ये एक्सप्रेशन हमें काम आएगी, इट इज एन इंपॉर्टेंट. तो ना टोटल फ्लक्स phi t is how much, Li, total flux phi t is equals to Li. So as phi t is equals to Li, therefore इसको इक्वेट कर सकते हैं, कर दो. Therefore Li is equals to mu naught I pi r square n square n, ठीक है. Now from here if you see I and I gets cancelled, तो बेटा क्या बचा अपने पास, we get therefore L is equals to mu naught n square pi r square n. ये हो गई एक एक्सप्रेशन, ठीक. और यहां पे स्मॉल n को n by l पुट करोगे तो you will get as L is equals to mu naught n square pi r square by n. These are the two expressions that you get for self induction. अब यहां पे गौर करो, इसी एक्सप्रेशन को एक और टाइप से लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, यहां हिंदी लिख देता हूं, हिंदी. If you see pi r square l, pi r square l, pi r square into l. If you consider this whole solenoid as a cylinder, if you consider this whole solenoid as a cylinder, so can it be termed to be the volume of solenoid? Can it be termed to be volume of the solenoid? बिल्कुल कह सकते हैं. तो ये बन जाएगा mu naught n square v. And in many places you will get the question of this sort also, that volume of the solenoid is as much. तो pi r square l की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्टली प्लेस कर देंगे. समझो बात, pi r square l क्या हो गया, वॉल्यूम हो गई. तो pi r square l की जगह अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड दिए तो डायरेक्टली प्लेस कर देंगे. ओके, अगेन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इफ यू सी mu naught constant, number of turns per unit length constant, pi for a given solenoid, pi constant, the radius of loop given solenoid के लिए constant, l. अब इसमें से अगर तुम कुछ चेंज कर सकते हो तो क्या क्या चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हो, सॉलिनॉइड अगर चेंज करोगे नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हो, रेडियस चेंज कर सकते हो, लेंथ चेंज कर सकते हो, घूम फिर के क्या चेंज कर सकते हो. यू कैन ओनली एंड ओनली चेंज द ज्योमेट्री ऑफ दिस सॉलिनॉइड, you can only and only change the geometry of this loop, you can only change the geometry of this coil. और तो कुछ I B phi कुछ है, कुछ भी नहीं.
That means again it is clarified that self-inductance is a constant and it totally depends upon the geometry of the coil or inductor. It doesn't depend upon current I, doesn't depend upon magnetic field B, doesn't depend upon magnetic flux phi. Is this part very much clear to all of you? Yes, please. Is this part very much clear to all of you? हाँ भाई, clear है? Is it clear to all? Okay. So with this, we'll end the topic of the day. That's all for today. Thank you very much. Enjoy your day. Have a nice day. Stay safe. Stay home. Take care. And say Bharat Mata ki Jai. Thank you.